अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 6 एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग इन कनाडा। तो पहले जो सबसे पहले आता है जी आपका रेंट। रेंट की कॉस्ट इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। कुछ प्रोविंसेस में कॉस्ट उसकी काफ़ी हाई है, कुछ में उससे थोड़ा बहुत लो करके है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ओंटारियो में रेंट आउट करना चाह रहे हैं, so let's say if you're planning to rent out a main floor of a bungalow or maybe a 2 bedroom apartment, तो उसकी एवरेज कॉस्ट जो है ना आपको पड़ेगी अराउंड $2500। तो लेट्स से इफ़ यू आर लुकिंग टू रेंट आउट अ बेसमेंट, उसकी आपको एवरेज कॉस्ट पड़ेगी अबाउट $1700 to $2000। सो ये है ओंटारियो का सेम सिचुएशन। इट कुड बी अ लिटिल बिट मोर इन BC एज वेल। और अगर आप सस्कैचुअन में देखें तो उससे रेंट कुछ कम करके है। फॉर एग्जांपल आपको मेन फ्लोर बेंगलो का या 2 bedroom अपार्टमेंट आपको मिल सकता है फॉर अबाउट roughly about $2000. Or let's say if you were looking at renting out a basement, it could be around $1500. So that's the average cost of renting out in Saskatchewan. So that's one of the biggest expense in Canada. अगर आप यहाँ पे मूव होने का सोच रहे हैं तो सेकंड जो बिगेस्ट एक्सपेंस आ जाता है जी वो है आपकी ग्रॉसरी। ग्रॉसरी अगेन इट वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, बट लेट्स से if it was for a single person, आपका एवरेज मंथली एक्सपेंस इज अबाउट $300 to $500। बट अगेन इट डिपेंड्स आप सिंगल पर्सन होकर कितना जो है ना उसके ऊपर खर्च करते हैं। तो but average I would say for a single person who normally eats 3 times a day, ज़्यादा आप नई एक्स्ट्रा जो है ना उसके ऊपर खर्च करते हैं अपनी ग्रॉसरी के ऊपर, तो इट्स अबाउट I would say $300 to $500। But again it can vary from family to family. Again, if you're looking for a grocery expense of a family of let's say 2 people, it could be around $1000 monthly. If you have, let's say if there are kids, तो उनका भी expense extra होगा, तो it could go up to 1500, and maybe more than that in some cases. So on average, if you see in term of a single person, it's about $300 to $500, again depending on different family situations. तो ग्रॉसरी का एक्सपेंस अगर हम देखें डिफरेंट प्रोविंसेस में, तो आई वुड से इट्स प्रीटी मच सिमिलर। क्योंकि लाइक लेट्स से यू आर इन ओंटारियो, वहाँ पे क्योंकि कॉस्ट ओवरऑल हाई है चीज़ों की, तो वहाँ पे आपको ग्रॉसरी का एक्सपेंस भी हाई मिलता है। लेट्स से अगर आप और किसी प्रोविंस में देखें जो परे करके हैं ओंटारियो से, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट एवरेज आई वुड से कि ग्रॉसरी का एक्सपेंस उतना ही है, बिकॉज यहाँ पे उधर से इंपोर्ट होके जो है ना चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी एक्सपेंस नॉर्मली उतना ही बन जाता है। तो दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ लिविंग इन कनाडा। थर्ड पे अगर आ जाए हम, तो हम बात कर सकते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, अगर आपके पास गाड़ी है तो दैट्स अ रिक्वायरमेंट टू हैव हियर। इंश्योरेंस वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। फॉर एग्जांपल इन ओंटारियो आपको एवरेज पर कार आपको इंश्योरेंस अराउंड $250 पड़ सकती है, depending on again on your history of driving in Canada or outside Canada, तो उस पर डिपेंड करती है इंश्योरेंस। ऑल्सो अगेन अगर आपको कोई टिकट्स वगैरह मिले हैं तो उससे आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बट ऑन एवरेज आई वुड से इन ओंटारियो इट्स अबाउट $250। अगर हम सस्कैचुअन की लेट से बात करें तो यहाँ पे इट्स अराउंड $150। सो जो डिफरेंस है यहाँ पे $100 का, वो जो उसका मेन रीज़न है
जब आप ओंटेरियो में होते हैं वहाँ पे आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं प्राइवेटली, डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जबकि यहाँ पे सस्कैचुअन में वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल बिट लेस एक्सपेंसिव हियर. So that's the third main expense. Again, if you have more cars and if you have more people in your family who drive, तो वो अगर आप उनके भी ऐड कराते हैं इंश्योरेंस, तो इट कुड डिक्रीज इफ यू कीप ऑन एडिंग. लेट्स से अगर आपको पर पर्सन 250 पड़ रही है, तो मे बी इफ यू हैव टू कार्स and if there are two drivers in the family, it could cost you around 400. So it depends on that. So that was the third biggest expense of living in Canada. उसके बाद आ जाते हैं हम, ये एक्सपेंस मोस्टली है जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे हैं और डे केयर में जाते हैं या प्री स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए है डे केयर की कॉस्ट या प्री स्कूल की कॉस्ट. तो वो है जी एवरेज अबाउट $250. It could vary a little bit around in different provinces. It could be different, but on average it's $250, whether they are going to daycare or whether they are going to a preschool. तो ये है जी फोर्थ आपका एक्सपेंस. तो फिफ्थ पे अगर हम आ जाएं तो हम बात करेंगे आपकी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट. यूटिलिटीज़ अगेन अगर आप रेंट आउट कर रहे हैं तो इट वेरीज कि आपको कितनी यूटिलिटी एक्सपेंस हो सकता है. इन सम सिचुएशंस योर लैंडलॉर्ड कैन हैव द rent plus utilities, some of the utilities included in the package when they are renting out their place. तो हो सकता है जी कि वो वाटर बिल खुद पे करें या हीटिंग का वो खुद पे करें. इन नॉर्मल केसेस वाटर बिल एंड हीटिंग इज इंक्लूडेड, बट कुछ केसेस में वाटर बिल भी आपको पे करना पड़ता है, हीटिंग भी आपको पे करनी पड़ती है, पावर बिल भी आपको पे करना पड़ता है और इंटरनेट का भी आपको पे करना पड़ता है. तो इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इट्स अबाउट, आई वुड से रफली अबाउट $50 to $75 per month on average, and again it's pretty much similar throughout Canada. अगर हम हीटिंग की बात करें, again it depends on the size of the family, but on average it's $100. And same goes for the power bill, that's your electricity. That's also about $100 per family. अगर आप इनको in terms of single person देखें तो you can do it half, because sometimes students are living together, तो वो जो है ना internet half हो जाता है उनका. Same goes for heating and plus the power bill and the water bill as well. So water bill is about $125 on average per month for a family of 2 to 4 people. But again, if you're a single person and if you have some other, let's say for students, अगर वो अकेले रह रहे हैं उनके साथ कुछ और students रह रहे हैं, तो then it gets divided. तो उनको maybe water would be around $50 per person. So it's like that. And the sixth expense that I would like to discuss is the for the expense for the gas. Gas के लिए आपको again it depends on your traveling, and this is an expense which could vary from province to province, because again if you're living in Ontario वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, आपको traveling में time काफ़ी लगता है, तो उस वजह से आपका गैस का expense भी काफ़ी होता है. I would say in Ontario it could be on average around $500 for a single person अगर बहुत ज़्यादा travel नहीं कर रहे हैं आप. अगर again it varies on traveling, and same in other provinces it could be a little bit less, could be around $300 to $400 depending on how much you drive, because कुछ cities हैं जहाँ पे ज़्यादा time नहीं लगता commute के लिए, तो वहाँ पे आपका driving का गैस का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम है निस्बत ओंटेरियो के और बीसी और इन अल्बर्टा. इफ़ यू लुक इनटू कैलगरी, तो ये जो बिगर सिटीज़ हैं आपकी, कैलगरी होगी, बाकी टोरंटो हो गया, वैंकूवर, इनमें जो है ना आपका
एक्सपेंस जो है गैस का, कम्यूट का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हैं जी टॉप 6 एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग इन कनाडा। अगर और आपको कोई भी कनाडा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो काइंडली मेंशन दैट इन कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।